तक आपको वो पी के नहीं आ रहा, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द हाँ, राइट तुम बस डेट की या कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज तक याद हो। है। बहुत weird है. I'll tell you. Example, if you're buying 100 grams of coffee, and if it is a blend of 80-20, then you're actually buying 80 grams of coffee. Whereas 20 grams is just added to the jar to increase the grammage. That's the beauty of coffee. Hi, welcome to yet another episode of the Brew Gang, where the conversation flows like a perfect cup of coffee. Today we have Karthik, the founder of the Coffee Click, with us. So how have you been, Karthik? I am doing really well. Thanks for having me today. Same. Thank you so much for coming. Karthik, so today I really want to know your journey exactly from where you started. I mean, making up a brand is not easy. ये हम सबको पता है Certainly. कि it is tough. तो आपकी कहाँ से जर्नी शुरू हुई? हाउ डिड दिस कम इन योर माइंड? आपने कैसे इसको आगे एक्सेल किया? व्हाट वर द चैलेंजेस? तो उस बारे में जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन इट. Sure. So I get this question very often, and surprisingly, I have multiple answers to it because the journey has been such. So this started in peak COVID. I was one of another patients in an ICU room where Okay. this all ideation happened, and few days in the hospital. जब मेरे को रूम में शिफ्ट करा गया, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड सीइंग दैट एनवायरनमेंट फॉर रफली 27 days, विच इज़ व्हेन आई रिक्वेस्टेड माई फैमिली कि आप मेरे को मेरा लैपटॉप, मेरा पेन, पेपर, जस्ट सेंड द स्टफ टू हॉस्पिटल. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन what my interests are, and what is that I can do better in. Which is why I've always been a coffee boy, which is where I thought that I have to do something on coffee. But then there were giants like Nestle. We all know Nescafe. Then there was, it was a cluttered market. Cluttered. You know, Yeah, it is. that's nothing that तो I बहुत नए ब्रांड्स भी आते ही आए जा जा रहे रहे थे, and those were the brands with deep pockets. They राइट. entered market जितना तो मेरे पास शायद total लगाने के लिए I had not thought of. And which is why I landed up into Beaten Coffee, because that was a household problem. Every time you see a guest at your place, you would see your mother or your sister or somebody in Beating. the kitchen. You'll see that, you'll hear that annoying noise coming, tuck Right, tuck 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 right, tuck right. tuck. So somebody in the family would know that beaten coffee बनने वाली है. And then there were no products available commercially, which resolved this problem of almost every Indian household. Which is when we started ideating this. I had multiple trials. And then we came up with 7 different flavors of beaten coffee. We discontinued one, we added 2 more, and now we have a range of 6 different flavors, and one is a non-flavored one. We very innovatingly also came up with a jaggery flavor, which is sweet. You don't have to, compromise on your taste buds, but that doesn't have any processed sugar in it. And when we started, there was no other brand. To our surprise and to our opportunity, ITC entered with Sunbeam. Of course, we know them. So that became a boon and a bane for me at the same time. And I don't know if I should be saying this on camera or not, but ITC has now quit this market. They've left Beaten Coffee. They've switched to So you've taken over ITC Yes, indirectly. yes. So I can now proudly say that we're the only ones doing this and successfully doing this from the last 3.5 years. So which of the flavor is the most loved one? So specifically, in terms of sale, Hello Hazelnut is one of our flavor which has been a constant bestseller throughout the 3 years journey. But lately, I've seen a shift. People have started accepting healthy jaggery as a daily routine flavor for themselves, because it gives you the kind of sugar that you want, but it doesn't have any processed sugar. It is made with organic jaggery. So typically, it doesn't harm you as much. बट जब आपने शुरू किया था, लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस. ये तो हो गया जो कॉफी फील्ड के चैलेंजेस है. Yeah. बट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें बहुत लोग होंगे हु वुड वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर. आजकल तो स्टार्टअप्स आर द थिंग कि हर Yeah. बंदा कोई स्टार्टअप करना चाहता है. तो ऑब्वियसली जब आप शुरू करना चाहते होगे कोई भी बिजनेस या कुछ भी उस कॉन्टेक्स्ट में, उस टाइम पे आपने क्या सोचा था कि यार कि कैसे मनी मैं
कितना मैं लगा सकता हूँ, या क्या चैलेंजेस आपको लगे थे कि ये शायद आ जाएगा, या मैं किस फील्ड में जाऊँ? कॉफी, यू चोज कॉफी बिकॉज यू आर अ कॉफी लवर, बट ऑब्वियसली व्हेन यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपने कुछ सोचा होगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, या ये करूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो समथिंग जो जो स्टार्टअप कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी हेल्प करे, उसमें ऐसा क्या होगा? Very interesting question. I'd like to answer this in two different purviews. So, one simple purview of a business is that there are three things. There is an input, there is a processing that happens, there is an output. अगर आप ये figure out कर सकते हो, no business is difficult to execute. Rest everything is your power of execution, your power of team building, what is your hunger to build that. Because tell me any business that doesn't have an input, doesn't require processing, and doesn't have an output. These are Hmm. these are typical. So what I figured out is that being in India, we are a coffee rich country. I mean, Right. we're the eighth largest manufacturer of coffee in the world. So we were in the center of the heart. Sourcing good coffee was not very difficult. It just required some analysis and some comparisons. Output, I was very sure of that beaten coffee as a proposition is not available in the market. The processing part was the flavor. I don't want to get into flavors that are not accepted in India. We started with flavors which are very acceptable globally, but didn't work out for us in the Indian market. We started with healthy jaggery. You would not find this anywhere in the world, but it is a hit in our country because specifically in North India, jaggery is considered as a go-to product. So that's how it started. And to answer your question, I did not learn this on day one, but now I know that too much of analysis can lead to paralysis for a Perfect saying. businessman. Too much of analysis can Can lead lead to to paralysis. paralysis. Yeah. So it happens, you can't answer all questions on day one. Right. You will answer all questions one day, but it'll certainly not happen on day one. So you just have to start with basics. बहुत basic चीजें figure out कर लो. Demand क्या है? आप उसको source कर सकते हो, and what is the value addition that you can bring. That's about it. Next step फिर आएगा. You'll face different challenges in packaging. You'll face different challenges in logistics. There'll be multiple challenges. But basics figure out कर लो. Rest everything can be figured out during the journey. बट ऐसे बहुत लोग होते हैं, लाइक एक एक नॉर्म है लोगों के माइंड में दैट बिजनेस का मतलब मुझे करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका मेंटल लेवल इज वेरी गुड विद बिजनेस, मतलब लगता है खून में बिजनेस है उनके, उनको समझ है, पर हर बंदे के पास वो पॉकेट लोडेड नहीं है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस करने चाहिए, कोई वे आउट होते हैं, या दे शुड बी ओके यार पैसा नहीं है जॉब ही कर लो? या आपको लगता है बिजनेस बनाने के लिए पैसा ज्यादा ना भी हो तो भी राइट एग्जीक्यूशन से आप धीरे 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 ग्रो कर सकते हो? Yes, this is true. This is true. You can build businesses. Of course, the pace will be not as fast as you would have wanted it to be, or for example, the legacy brands are doing it. But money is not the only constraint to build a business. If you are perfect, I did not use the word perfect. If you're good with your execution, if you have perseverance, if you're adding a value, you will build up a business. Maybe not in the first year, not in the second year, but maybe in the fifth year. But you will hit that bone if the execution is strong, the value addition is strong, and if you're able to bring some kind of value to the consumers. Money will obviously it'll come in, it'll be required. If you're doing good stuff, you will get fundings. But reaching out to angels today has become so easy versus how it was 10 years back. You would raise a family and friends around, you would find angels, you would find VCs. As you grow, you will figure it out. But money being the constraint to not start it, I don't advocate it. You don't? No. So, अब talking about your brand, let's say I am a customer and I would want to know कि आपका brand unique क्यों है, क्यों ये अलग है, या मैं क्यों इस पे switch करूं? Why is your brand the brand for you? So again, coming to the same fundamental basics, value addition. I don't know any other brand that sells beaten coffee in 7 different flavors right now in India. Globally भी नहीं है, but that is not our go-to market for the time being. Right. But
I'd also like to ask the audience if they know any brand which sells seven beaten flavored coffees in India. I don't recall any. So that's the kind of value addition that we're adding. Now, how it has become a convenient go-to product for at least the users that I communicate to is that you just have to open, you put it in a cup, you add a cup of hot milk, and your cappuccino is Very ready. convenient. It is not even three steps. I'd rather call it 2.5 steps. You just open, you pour, add hot milk or cold milk as per your preference, and your cold coffee or a cappuccino is ready. That's the ease and the convenience which we've added to our product. We've priced it very, very budget friendly. We are not a premium brand. We are not priced at a David of the world. But the agenda is that I cannot sell 100% Arabica beans in 100 rupees or 250 On it, rupees. yeah. If you wish to have good coffee, you would have to spend anywhere between 400 rupees to Right, 500 right. rupees. So that's what And it has has no helped us. preservatives, It has no preservatives, like which is instant why coffee. which is yeah no, it doesn't have any preservatives, which is why we are still figuring out on shelf lives. Unlike a Nestle or a brew, which has 24 months of shelf life, we typically have 90 days because we don't add any additives. But I also want to know regarding your packaging. Packaging के पीछे क्या thought रहा है? Because I see simple है, but it is a nice packaging and not like बहुत प्रेशर में जाके या बहुत ऐसा नहीं है कि टू मच इनटू पैकेजिंग. बिकॉज आई हैव सीन, मैंने जितने यूजर से बात की है, आई हैव सीन दिस विद देम दैट दे हैव दिस थिंग कि अब हमें कलरफुल पैकेजिंग से ज्यादा इंटरेस्ट रह गया है कि आपने उसमें डाला क्या है. बिल्कुल. अगर आप एक सिंपल पैकेजिंग के साथ हमें सब कुछ मेंशन करके दे दोगे, वी वुड प्रेफर दैट मच मोर एज कम्पेयर टू समथिंग कि आपने बड़ी कलरफुल हाई एंड पैकेजिंग कर दी है. I may sound weird because it is going against what we hear on Shark Tank कि आपने पैकेजिंग में बहुत अच्छे से नहीं किया or something Yeah. like that. But I am talking like a normal user कि मैं कोई भी चीज लेने जाऊं, मैं उसकी पैकेजिंग देख के पागल नहीं हो जाऊंगी. मैं पैकेजिंग उठा के पढ़ूंगी उसमें है क्या क्या. अगर मेरी को राइट चीजें लगती हैं तो मैं वो ले लूंगी. अब वो जितनी भी अच्छी पैकेजिंग हो, और अगर एक सिंपल ब्राउन पैकेज भी हो पर उस पर लिखा हो अच्छे से, तो मैं ले लूंगी. रादर मुझे, और अगर प्रोबेबली कोई पैकेजिंग मुझे एक्सपीरियंस कोई दे रही है, देन आई वुड प्रेफर कि हाँ इसमें मेरी टाइप की चीजें भी हैं, दिस हैज ऑल क्लीन गुड स्टफ, येट इट इज ऑफरिंग मी अ गुड एक्सपीरियंस, Absolutely. गुड इनफ. बट आई एम नॉट अ पर्सन हु विल से कि यार पैकेजिंग देख के मैं चीज उठा के ले आऊं. So, what was your thought when you were planning the packaging of I that? agree with what you said. Bright colors, fancy fonts. But I'll go one step deeper. So typically what happens is, it used to happen with our team also when we go to a designer or if we go to somebody who's manufacturing these boxes for us. We'd get a certain quotation. Now we know that we have a canvas. As an Indian mindset, हम सोचते हैं कि हमारे पास जितना कैनवस है ना उसको सब कवर कर लो. पैसे तो लग ही रहे हैं ना. हाँ. 10 रुपए का बॉक्स बनेगा, 20 रुपए का बॉक्स बनेगा, सब लिख दो उस पे. बट दैट इज नॉट द काइंड ऑफ अपील दैट attracts people now. So if you see, we've specifically kept this empty. Empty. Because if this goes to an e-commerce marketplace, यहाँ पे label आ जाएगा any which way. We've not utilized the front entirely. So that's the ideology that we've kept कि sometimes more is not good. Right. Sometimes less is Less good. is good. So there are only 6 things mentioned, but those are the most relevant things that you'd want to read on a box. That's about it. We've kept it simple very specifically. Since you told me you've been a coffee lover, तो कॉफी के साथ ऐसी कोई वियर्ड या फनी मेमोरी, प्रॉब्ली कोई फर्स्ट डेट की या कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज तक याद हो? है, बहुत weird है. I'll tell you. So I was very young. I don't know. I must have been 6 or 7 years old. मेरे को तब से कॉफी अट्रैक्ट करती थी. मुझे अच्छा लगता था कॉफी पीना. तो we went on a family vacation to Dubai. I was too young. I was 6 or 7. तो there was this very fancy coffee shop. I had no idea कि कितने रुपए की आती है, कितने पैसे लगते होंगे. So I told my dad कि कॉफी पीते हैं. And nobody else in my family was a coffee fanatic. Yeah. So they said ठीक है, तू ऑर्डर कर दे, तेरे को जो लेना है. And so I went through the menu
एंड आई सॉ कि जो सबसे सस्ती कॉफी मैं वो वो ऑर्डर order कर लेता हूँ, डांट भी नहीं पड़ेगी और अच्छी कॉफी भी मिल जाएगी. So I ordered, I came back to my seat, and the server came to us with this smaller size of a coffee. And everybody in my family was looking at me. जब वो चला गया तो I found an Indian guy there. I said, यार ये क्या हुआ? He took some 10 odd dirhams from us and this was it. So he said, ये तो आपकी existing coffee को strong करने के लिए top up shot था. अच्छा So you read the menu the other way कि सबसे सस्ता क्या सस्ता है है मेरे वो को. ऑर्डर कर दो So you have to buy a coffee. कॉफी If you फिर don't ये find टॉप it, अप शॉट है. if you don't find it strong, you add a top up shot to it. So you ordered a top up shot. तो कोई लाइक अब आप जैसे कॉफी में हो तो ऑब्वियसली कुछ होते होंगे, कुछ फैक्ट्स या मिथ्स आपने भी सुने होंगे विच लाइक जब आप इस बिजनेस में घुसे होगे, यू एंटर्ड द मार्केट, यू थॉट दे वर ट्रू बट देन यू रियलाइज दैट दे आर नॉट ट्रू, मिथ है. तो टेल मी एनी 5 ऑफ सच में. I am not sure if I can tell you five, but Three. I'll tell you the most crucial ones. So there is a term in coffee products which is called a blend. Right. You must have heard of. Now, how brands play with this term is typically a blend could be of anything. So, for example, if I am infusing a flavor into a coffee, that is also a blend. If I am using Arabica beans and I'm using Robusta beans and I'm making a blend of it, that is also called a blend. But how bigger brands use this word blend is they add chicory to it. And then they sell it as 100% coffee. Okay, for the audience, what is chicory? So chicory is basically the husk that is left, which is not typically coffee, which is only added to coffee to increase its grammage. So for example, if you're buying 100 grams of coffee, and if it is a blend of 80-20, then you're actually buying 80 grams of coffee, whereas 20 grams is just added to the jar to increase the grammage. वो कॉफी का वो होल कॉफी में या कॉफी ग्राउंड कॉफी में वो नहीं आती है. No, दैट्स रादर जो रह गई है, बच गई है yeah. सारे प्रोसेस के बाद. Correct. So chicory is basically adding grammage, but there are certain advantages also because chicory doesn't spoil coffee. So there are no side effects. There are no bad inputs that go into coffee. It just increases the grammage. If you're mentioning it on the package that it is a blend of 80% coffee and 20% chicory, I'm with you. But if you're saying that you're selling 100% coffee and then you're writing it in the smallest font possible, that it is a blend. It is a blend of 80% coffee and 20% chicory or 70 or 30, whatever. Then you're typically misleading your customers, which I found as I proceeded with this journey. I used to read a lot of labels, which is when I figured that the blend that they mention is not a blend of flavors. It is not a blend of Arabica or Robusta. It is actually a blend of coffee and a non-coffee product just to increase the grammage. Any other myth which you came across? Myth तो नहीं है, but I'll tell you a fact. So a same cup of coffee can actually taste different basis your mood. So for example, we're having this coffee right now and I'm in a good mood. I'm liking this coffee. But if I'm having a bad day, the same cup, the same proposition will not taste me as much as it is today. And that's I'll give you another fact. So I don't know if you will be able to air this or not, but it is typically said that how you perceive a coffee is how you perceive your sexual desires also. So for example, if I ask you what is that one thing that you like in coffee and you tell me that it's aroma, most likely the trait that you'll find in your partner would be also their aroma. So for example, if you say that I like how a coffee is strong, is kind of the same trait that you will find in your partner, that the partner should be strong, not physically, but the other way. So then I can relate to this because I prefer aroma. And I always tell my husband that you should smell good. Any guy should smell good. So yeah, I'm right. You're right at this. That does. But when you talking about perceiving in terms of your mood, so how does that actually happen? I mean, any particular reason why does that happen, or is it just because कि तुम्हारा mood खराब है, तुम्हें सब कुछ ही खराब लग रहा है? Could be. I don't know the science behind it, but
I as a customer of our own products also, I can say it. मेरे को अपनी कॉफी किसी दिन बहुत अच्छी लगती है, मुझे कभी कभी नहीं भी अच्छी लगती है, मूड के हिसाब से. मूड के हिसाब से, या probably the milk is not as hot as I like it, or if somebody else has served it to me, I don't like it how they've made, because this is very subjective. Coffee is more of a lifestyle. आपको कोई भी आके पिला देगा, आप पी लोगे. But if you don't enjoy it, so I usually say it to people I hang out with, that you sip a cup of coffee. That's not how you sip it. You slurp a cup of coffee. जब तक आपको वो पी के नहीं आ रहा, तो you're not drinking the हाँ, right तुम बस coffee. पानी की तरह पी पानी रहे की हो तरह उसको, पी रहे हो. उसका. Probably you need a caffeine dose is why you're having the coffee. But you can sip a cup of tea, water, anything else. But coffee you have to slurp it. You have to feel the You have flavors to also. feel the flavor. It goes into your body. You feel every sip, you'll feel it. That's how you enjoy a cup of coffee. I was speaking to someone who told me कि इस year coffee के prices बढ़े हैं. जी. And lot of coffee founders are concerned कि this year is either going to be a make it year for us or break it year for us. Right. So what are your views on that? See, this is true. Coffee prices are going obnoxiously high. And it is the second most traded commodity globally after petroleum. Petroleum is the first most commoditized product that gets traded globally. Second is coffee. But I think it will not impact as much as the air is about it, because if you're having a good cup of coffee. So, for example, I know when I started driving in Delhi, petrol was at 54 rupees. Now it is at 95 rupees. Do I not drive today? I do. You do. Do I not go to office today? I do. There is no alternative to it. Coffee prices may increase, not as high as the example I quoted, but it will not hamper the market as much as the air is about it. I don't think so. And, we're sitting in a region where we have an advantage. We sit out of India. India is the 8th largest manufacturer of coffee. And trust me, I'm not saying this because I'm an Indian, but Indian coffees are really one of the best coffees I've tried. Next bigger opportunity is Southeast Asia. There's Colombia, there's Ethiopia, there's Vietnam, and all of these are our very close neighbors. I don't think the prices will impact as much as the air is about it. But will they go down also, or No, they will not go down. ऊपर ही जाएंगे? ऊपर ही जाएंगे. अब आप डिमांड के ट्रेंड्स देखो ना. आज से 10 साल पहले coffee was typically if you have some guests over, or if you're going to a special occasion, या फिर रात को बैठ के कोई काम मूवी कर देख रहे हो, रहे हैं, या काम कर रहे हैं. if you're going on a special date, that was your coffee Coffee consumption. consumption, right? Today मैं अकेला बैठ के भी कॉफी पीता हूँ. मेरे को ऑफिस में भी कॉफी चाहिए. When I leave for office in the morning, I need one tumbler in my car also. मैं किसी से मीटिंग भी करने जा रहा हूँ, whether it's a formal meeting, it's a date, I need coffee. You see the kind of demand that has gone up. Right. अब आप हमारे पेरेंट्स की एज पे somebody who's right now 50 or 60, उन्होंने शायद 25-30 साल तक कॉफी कभी पी नहीं थी. है. आज भी चाय से जाके आज कॉफी भी पे चाय पहुंचना नहीं चाह रहे. बिल्कुल बिल्कुल. अब स्कूल के बच्चों को भी कॉफी चाहिए. आई नो समबडी, हर डॉटर इज 7 years old, एंड वो सुबह स्कूल जाने से पहले कॉफी पिएगी, शाम को आएंगे तो कॉफी पिएंगे, एंड दीज आर यंग किड्स, 7 years old. So you But see they the also see, is it a myth? They say it that कि coffee is not for kids. बच्चों को मत दो. It's a no, myth. it's a myth, 100%. Coffee doesn't, because I've also heard कि coffee has, अब तो coffee को liver detox के लिए, good effects on heart के लिए भी काफी ज्यादा बोला जा रहा है कि it helps you detox your liver, especially black coffee के लिए. Yes. But does it really helps as per you? See, I'm not the right person to comment because it is very subjective. It is, it can be somebody's life and death decision to have coffee or not. When you say it is something that may cause you heart attack, I don't want to comment on it. But what I for sure know is that coffee is the only beverage that has a history of 100+ years, which has researches that it has no side effects. There is no research on tea as of today when we speak. There is, certainly. I came across 1-2 researches while I was just going through about it कि एक तो tea is not good for your heart. Proper
रिसर्च हुई हुई है एंड प्रॉपर थीसिस आए हुए हैं, मेडिकली भी डॉक्टर्स ने बोला है कि टी इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट. Because I remember there was a time one of the heart specialists said that, especially milk, as per them, तो उनका कॉन्सेप्ट तो मिल्क का भी था कि जो काफ होता है वो भी 6 months के बाद मिल्क नहीं पीता. तो आप लोग क्यों इतने बड़े होने तक मिल्क पीते हैं? एंड मिल्क में आई फॉरगॉट द नेम, कुछ होता है, बिकॉज आवर काउज दीज डेज आर नॉट दैट क्लीन. मतलब हर Yeah. काउ तो आपको बाहर भी मिल रही है, गलत तरीके से उसको फीड किया जा रहा है, काफी चीजें हैं जो Yes. उसके लिए राइट नहीं है, जिसकी वजह से मिल्क क्वालिटी हैज बीन हैम्पर्ड. बट कॉफी के लिए तो प्रॉपर रिसर्चेज आई हैं, प्रॉपर मेडिकल वो आया जिसपे बताया गया कॉफी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, कॉफी आपके लिवर डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छी है. टू बी करेक्ट, कॉफी इन नॉर्मल टर्म्स कि 2 कप पी रहे हैं, 3 कप Yes. पी Of रहे हैं. course. Of course. ओवरडोज नहीं अच्छी Correct. कि आप वो डिहाइड्रेट भी करेगी. अगर आप Yeah. 10 कप पी गए तो डिहाइड्रेशन होगा. हाँ, अगर आप 2 कप रोज के पी रहे हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर योर लिवर. वो इट तो इज अ देखो गुड ना, डिटॉक्सिफाइंग एज सिंपल एज एजेंट. आप ज्यादा पानी भी पी लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा. राइट राइट So overdose of anything would hamper your normal routine of राइट health. राइट. But of what my best knowledge has been, that coffee doesn't really, the kind of myths that we hear that it causes heart attack or something It like that. I doesn't. don't want to comment on it, No, but you I can't. don't But think. because I do have proofs जहाँ पे प्रॉपर कटिंग्स हैं विद Correct. डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर्स ने बोला, काफी डॉक्टर्स ने बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि कॉफी टी कुछ भी हो, ओवरडोज इज Of इंजूरियस course, फॉर of यू. course. पर अगर आप उसको एक डिसेंट तरीके से पीते हो तो वो कभी आपको Correct. हार्म नहीं And it करता is the only beverage that has 100+ history of, researches. है. There are n number of researches and there is no negative aspect of it. I don't know if I don't know, I don't follow tea as much. I don't know वो उसका है या नहीं, but what I very confidently can say is कॉफी पे आज तक कोई रिसर्च नहीं है कि किसी को कोई हेल्थ हजार्ड हुआ हो कॉफी पीने से. मैंने हाँ, पर हाँ कई लोग कहते हैं कि कॉफी बीपी को शूट करती है. शूट करती है. इज दैट ट्रू? नॉट इन टर्म्स कि आपने Again, कहीं पढ़ा, मतलब very सुना subjective. है या कभी. वेरी सब्जेक्टिव, वेरी सब्जेक्टिव. कई लोगों का करती है. आई नो पर्सनली पीपल हु कांट कंज्यूम कॉफी, बट आई डोंट नो, दिस कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स मुझे हैपनिंग मुझे इन योर लगता है बॉडी. ये फिक्स नहीं है, बिकॉज Yes, आई हैव अ रिलेटिव एंड शी हैज हाई बीपी, बट शी कांट सर्वाइव विदाउट 3-4 cups ऑफ that ब्लैक is what कॉफी. I'm saying. That is what और I'm उनका saying. बीपी शूट अप नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा है ना. मेडिसिन पे करेक्ट. है वो अपनी बीपी की. और वो शायद गलत भी होगा, सही भी होगा, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बिकॉज मेरे को या पता नहीं है. बट मैंने ये देखा है कि बीइंग अ बीपी पेशेंट भी वो 3-4 कप ब्लैक कॉफी के पीती हैं दिन के, मैं विच वही आई कह डू रहा हूँ कि क्वेश्चन हर अबाउट. बट शी इज लाइक कॉफी मैं के तो नहीं रह सकती, मैं ठीक हम्म हूँ ऐसे ही. क्योंकि कॉफी कैन नॉट बी द ओनली सोर्स जो आपका बीपी बढ़ा रहा है या कंट्रोल कर रहा है. आई डोंट अग्री टू इट. It is a combination, it is an amalgamation of multiple factors. I don't know how your heart performs, I don't know how your liver performs, and what coffee is adding to it or what it is taking away from your body. I don't know. But coffee cannot be the only driver to deteriorate your health or to even improve your health. It is It can be one of the factor. it could be one of the factor, and 1 out of 10, 1 out of 100, I don't know, but this is surely not the only factor that can help you in any ways or can deteriorate you in any ways. That is for sure. And like हर सोसाइटी में there are different category of people. There is one section and one category who loves to make their own coffees at home. उन्होंने proper coffee machines ले रखी हैं, coffee corners बना रखे हैं. They enjoy Yeah. their coffee. They relish it literally. पर एक section ऐसा भी है जो कहता है कि जितनी भी अच्छी कॉफी हो, पर आज के टाइम पे इतना टाइम का है कि हम अपनी कॉफी बना पाएंगे. Correct. तो do you think this will impact coffee market? No, this will not impact. I'll tell you how. जिनके पास टाइम नहीं है उनके पास, assuming that they are working professionals, young working professionals, they don't have time Monday to Friday 9 to 5. I agree. But if somebody enjoys coffee, so for example, मेरे को गोल्फ खेलना पसंद है, बट मैं क्या रोज गोल्फ खेलने जा सकता हूँ? नहीं. नहीं ना. मैं सैटरडे संडे आई फिगर आउट टाइम. पर उसके लिए आप गोल्फ किट प्रॉपर लोगे, या गोल्फ आउटफिट चाहे लोगे. आप राइट. करेक्ट, that is precisely. So if somebody enjoys traveling, can you travel 365 days? No, You we cannot. can't. If Right. you enjoy mountaineering, can you do it all day? No. Similar is the case with coffee. आप मंडे से फ्राइडे 9 to 5 कंज्यूम इंस्टेंट कॉफीज. दैट्स ओके. अच्छी कॉफी पियो, बट ठीक है, इंस्टेंट कॉफी पियो. पर बट इंस्टेंट कॉफी में कहते हैं फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स.
आई हैव स्पोकन टू 2-3 फाउंडर्स जिनका ये कहना है कि कॉफी पीनी भी है तो ग्राउंड कॉफी पियो या दूसरी पियो, पर इंस्टेंट कॉफी इज अ नो बिग बट नो. यू कोटेड इन अ वे कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हम्म. बट वो प्रिजर्वेटिव्स हार्मफुल हैं? डिड एनीबडी रिसर्च ऑन इट? आई डोंट थिंक सो येट. दैट इज एक्चुअली मेरे को लगता है प्रिजर्वेटिव वर्ड सुन के ही ना हम लोगों ने करेक्ट। साइन, हम लोगों के दिमाग में हार्मफुल ही आता एग्जैक्टली है. आपने जब उसको बोला तो यू हैड अ प्री अज्यूम्ड नोशन कि राइट, इंस्टेंट कॉफी में प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव्स है. हैं तो ये खराब है। ऐसा किसने बोला? Preservatives typically means to increase the shelf life. हम्म. It is not, causing a health hazard to you, or it is not as bad as it is portrayed. Go to your kitchen. 80% of your stuff in the kitchen has preservatives in it, except for the fresh fruits or vegetables that you get. उसमें भी कुछ, आजकल तो उसमें भी आने लगे हैं. तो वही मैं कह रहा हूँ, आप मंडे से फ्राइडे यू consume instant coffee, but if you relish the culture and the lifestyle of coffee, do it on a Sunday. Sit with your partner, sit with your parents, sit with your kids, enjoy, have a cup of coffee. तो आप, आई जस्ट वांट नो वन मोर थिंग दैट एआई इज स्लोली टेकिंग ओवर, राइट? यू थिंक आने वाले टाइम में एआई कॉफी एज इन प्रॉपर आपकी पर्सनालिटी, आपके टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज्ड कॉफी विल बी अ बेटर हिट एज कंपेयर टू समवन हु इज अ ट्रेन्ड barista? No, I don't agree to it. AI coffees you don't think can replace? This is again very personalized. So for example, I have this disconnect with all the cars that are coming today with so much of technology, so much of, so basically what has happened is it has taken the input of the driver away from the vehicle. Now you don't feel as much connected. मैनुअल गाड़ियों में और ऑटोमेटिक गाड़ियों में भी एक डिस्कनेक्ट था, दैट यू डोंट गेट दैट feedback from the car. Now there is so much of technology. For example, ADAS. Do you think it is successful on Indian conditions? No, it is not. It is a cause of more accidents than it is saving. It is causing any help. I don't believe it. Similar is the case with coffee. आज भी आपको लगता है कि घर की हाउस हेल्प चाय बना सकती है, बट व्हाई डू पीपल प्रेफर मेकिंग देयर ओन टीज? बिकॉज दे एंजॉय, देयर इज समथिंग दैट गोज इनटू इट, जो आप खुद बना के एंजॉय कर सकते हो. हम उनका, बड़े लोगों का एक फिक्स्ड होता है, अदरक कूट के इतना डालो, या उसमें ये डालो, जो शायद बाकियों के, और बड़े लोग बोलते भी, आई हैव हर्ड कि उसके हाथ नहीं, मेरे को इस फलाने बंदे की ही चाय बहुत सो पसंद है, इसकी व्हाट चाय यू नहीं अच्छी सेड लगती. is a good proposition, but commercially. So, for example, there is a 500-seater office space. Google के ऑफिस में एक मशीन लगी हुई है. वहां पर हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड है. Karthik Seth consumes cappuccino with a dash of sugar and 2 shots of espresso, for example. And during the day, 3 p.m. after my lunch, I consume a black coffee. And that's associated to Karthik Seth, employee code Google 0018. Ashna consumes black coffee to start her day, and then she has a cold coffee. This is where AI can play a role. You don't have to give that feedback to the machine every day. You go, you put your thumb, maybe your biometric or whatever, and the machine figures out कि अभी 3 बज रहे हैं और ये आशना ने चेक इन किया है, आशना को 3 बजे कोल्ड कॉफी चाहिए होती है, ये रही आपकी कोल्ड कॉफी. इट कैन हेल्प यू एज अ सर्विस, बट कस्टमाइजेशन आई डोंट बिलीव AI is required here. Don't over put everything in everything. Right. So the use case that you've put is very relevant, but it is more from a convenience point of view, more from a tech point of view, more from a fancy fidgety product, but not for consuming a cup of coffee. Is there any one coffee trend or coffee culture जो आपको लगता है बहुत जल्दी, मतलब it should disappear ASAP, and one trend or culture जो आपको लगता है that we should adapt now? No, I don't think, because again, coffee consumption is very subjective. I can't force somebody to do what I like, and neither do I want to adapt something that somebody else is doing. So, for example, if you see, French vanilla as a flavor is very acceptable in Tim Hortons Canada. Right. Tim Hortons India में खुला,
French vanilla was their least sold SKU. They expected. Similar is the case with McDonald's. When McDonald's came to India, मैक आलू टिक्की पूरे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मिलता है. There is no other place where you get McGrill also. McGrill also. So again, this is very subjective. I can't force somebody to, take 2 sachets of sugar and a dash of espresso shot and add 80 ml of milk and your cappuccino is ready. I don't want to do that. So this is very subjective. I'd rather, let the consumer decide कि उसको कैसे coffee पीनी है. That's the beauty of coffee. You can enjoy it. So there are people, there are bakeries that make beautiful desserts out of coffee. Yeah. And I really can't stop appreciating and cherishing it. अब कॉफी तो पीने के लिए थी ना, वो तो ओरिजिनली एक चेरी थी, फिर एक फ्रूट बना, फिर एक बेवरेज बना, अब उसका डेजर्ट बना दिया. बट अगर वो डेजर्ट अच्छा बन रहा है तो व्हाट इज द हार्म. आपने कभी कोई कॉफी के साथ वियर्ड एक्सपेरिमेंट किया है? कुछ ट्राई करा है? कोई ऐसी ड्रिंक बनाना कॉफी के साथ, कोई मॉकटेल या समथिंग जो अच्छी हो गई या बहुत बुरी हो गई? So I saw this on an Instagram reel that people were putting a shot of espresso in a JD. Okay. So this was roughly 30 ml of JD and espresso, and then you add whatever choice of mixer you want to. add. So I tried this at a cocktail mixer event, and there were professional bartenders and baristas who were doing it. There was a set of baristas, then there were a set of bartenders who were doing this. And the cocktail that they had given me, it was JD plus a shot of espresso, was really nice. I really enjoyed it. Yeah, I really. एंड कभी कोई घर में एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है ऐसे मॉकटेल का, या कुछ वियर्ड किसी आइसक्रीम के साथ, या वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी उसने कोकोनट वाटर के साथ कॉफी पीता, which was very nice. I read this somewhere. Coconut water in coffee. Did you ever try something like this? I actually tried. So we sell beaten coffees. This is more of a paste. And other things in paste in your kitchen are a jam or a butter. Right. Butter is not typically paste, but a jam is a paste. So I had put our own coffee on a loaf of bread and I'd had it. And how was it? It was good. I enjoyed So this it. is something that we can try. This was weird. I don't often talk about it. But you never know. You can try and see how it comes out. Nutella भी ऐसे ही लगा के खाई जा रही है. That is also a paste. So yeah, I did try that and I enjoyed it. So where do you think कि 2030 में कॉफी मार्केट कैसी होगी in terms of people loving it? Because हमने different waves of coffee देखी है. थर्ड वेव तक हमने देखा है कि सडनली कैसे क्वालिटी स्टार्टेड मैटरिंग, द टेस्ट नोट स्टार्टेड मैटरिंग. व्हाट डू यू थिंक कि बाय 2030 कॉफी कैसी होगी? दो चीजें और मार्केट कैसी होगी उसकी? श्योर. तो दो चीजें जो सर्टेनली होंगी. एक तो एक्सेप्टेंस बहुत रैपिडली बढ़ेगा. सो फॉर इंडस्ट्रीज वी यूजुअली सी अ कैगर ऑफ, so for traditional industries a CAGR of 5%, 8%, 10% is considered as a fair CAGR. For upcoming categories, a 10 to 15% CAGR is considered to be a fair growth. Coffee industry अभी भी 30% CAGR पे grow करती है. So one thing Just which for the audiences, could you explain them what is CAGR? Because I think so it is basically a metric. It is a financial metric which defines the growth rate which happens every year for an entire industry. So that's 2030 में मुझे लगता है कि दो चीजें फॉर श्योर होंगी फॉर द कॉफी इंडस्ट्री. एक, एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाएगी. It will not be only fancy coffees being sold at 700 rupees a cup, but it will be small outlet selling coffee. जैसे अभी आपको सड़क के कोने पे एक सिगरेट की दुकान या एक चाय की टपरी दिख जाती है, you will for sure see coffee being sold on railway stations, on metro stations, on bus stands. Coffee की acceptance बहुत बढ़ जाएगी. दूसरा, people will start cherishing good coffee. ये तो 2030 से बहुत पहले हो जाएगा. No, again, if I'll say this, I'll get a backlash, but ₹2 का एक sachet consume करना, I'll not name any brand. They're also doing a good job. But ₹2 का एक sachet consume करने से better, people will start carrying their own coffee. They will start accepting and they'll start cherishing good coffee. But then this I think even happens now. वही मैं कह रहा हूँ अगर कि मैं ये कहीं 2030 जा रही हूँ, से मैं जो पहले. कॉफी मुझे पसंद है मैं अपने साथ लेके चली जाऊंगी Correct. कि यार कहीं जाऊंगी थोड़ी सी
दैट इज वाई आई थिंक अब जो पोर ओवर कॉफीज है या ट्रैवल फ्रेंडली कॉफीज है, अब उनका डिमांड भी बढ़ रहा Yeah. है बिकॉज दे हैव लॉयल कस्टमर्स. हम्म तो अगर मैं लॉयल हूँ, मेरे को अपना ब्रांड पसंद है, मैं उसका लेके जाऊंगी 4-5 हम्म पैकेट्स की. गर्म पानी दो, मैं अपना डाला, या ठंडा पानी दो, मैंने अपना डाला. मिल्क दे दो, जैसी मुझे बनानी है मैं अपना बना के लेके जाना चाहूंगी. एंड आई स्लोली सी जो बिगर ब्रांड्स थे उससे बेटर छोटे ब्रांड्स जो Yeah. आ रहे हैं, दे समहाउ हैव Yes. टेस्ट. आई एम नॉट नेमिंग एनी ब्रांड, बट somehow they do taste much better than those big That's true. brands. That's true. और इवन जब ब्रांड्स, एक चीज मैंने ऑन नोट की, जब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स निकालते हैं, SKUs निकालते हैं, दे वेरी गुड. पर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो जब वॉल्यूम में डील करने Over the लगते time हैं, खराब हो जाता वो है. वो जाने लग क्वालिटी जाने लगती है. True. विच आई थिंक वी, मतलब अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा रहना है तो आपको क्वालिटी से Quality. पीछे नहीं जा सकते. आप कम कर लो पर क्वालिटी आपको So I मिलनी often चाहिए. tell this to my team also, कि if you are able to build a good fundamental structure, trends will come, trends will go. That is why it is called a trend, that it will not stay forever. Dalgona coffee came in COVID. हाँ, Everybody did that. But क्या हुआ उसके बाद? आज तो चला नहीं गया, कोई कर रहा चला. ना. Nobody is doing that today. I don't see नो, आई anybody. डोंट. Correct. So trend will come. Some trends will stay for a week. Some will stay for a month. Some might stay for 6 months also. But if you are fundamentally strong, मैं आज अगर अपनी कॉफी की सोर्सिंग, आई डू इट वेरी एथिकली फ्रॉम very meticulous sourcing from farmers who I know are not using pesticides, who I know, are not dealing into commercial coffee की कम लैंड में ज्यादा वॉल्यूम निकाल लो, पैसे ज्यादा बन जाएंगे. If you are fundamentally strong, you will be able to take up all trends, you will be able to take up all challenges, you will bypass all potholes. बट अगर आपका फंडामेंटल बहुत वीक है ना, कि आज ये चल रहा है, आज ये कर लेते हैं, कल कुछ और कर लेंगे, क्या ही पता लग रहा है, that typically doesn't happen. Consumers राइट. are really smart ये आई today. रिमेम्बर जब हम भी काम शुरू कर रहे थे तो माय को फाउंडर एंड माय हस्बैंड मुझे बोला था कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, एक काम में बैठे रहो, Yes. करते रहो करते रहो. अगर Perseverance. डर के निकल गए कि यार हम्म अभी तो नहीं चल रहा, अब छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं, अब हम्म ये कर लेते हैं, तो तुम कभी वो अचीव ही नहीं कर पाओगे जो Just तुम as कर. how I was mentioning it to you, so when we started, there was no big brand in the beaten coffee segment. So when ITC entered, more than a fear, I took it as an opportunity कि अगर ITC जैसा brand must have come with, huge loads of research. राइट. So if they can find a spot कि हाँ beaten coffee की इंडिया में market है and it sells at a 200-300 rupees price range, so then I think I've not spent that much of money on research, but then they've given me a validation. कहीं पहुंच गए हम, कहीं हम पहुंच गए हैं कि अगर ITC इस मार्केट में एंटर करना चाहता है, तो कुछ तो अच्छा है. तो with their distribution, with their supply राइट chain, राइट. with their brand name, they must have figured out कि कुछ तो कुछ gap तो है, सही है. राइट and we have been doing it. राइट. So I took it as an opportunity. But when very recently ITC moved out of it, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ITC मूव आउट कर गया, बिकॉज ऑफ बिगर ब्रांड्स कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ overheads also, a lot of marketing expenses also, a lot of other things also, which we as a comparatively smaller brand are very controlled. We are running this organization profitably. So I don't think, because मेरी डिमांड तो नहीं गिरी पिछले 3 साल राइट. में. I have grown year on year. We've grown month on month. We've added new SKUs. We've deleted some. We've seen that acceptance coming in. I don't take it as a challenge कि if ITC couldn't do it, probably their level of operations was something else. They couldn't do it successfully at that level, but I am able to do it. Which also typically doesn't mean that I'll not expand my portfolio. I राइट. will. We as a brand will for sure expand our portfolio in the coming near future. But Beaten Coffee still remains our identity. It still remains our, the product that we started with. Because then there is a certain audience that is dependent on us. राइट. उनको बीटन कॉफी अब चाहिए, उनको द कॉफी क्लिक से ही चाहिए, उनको एक एक्स फ्लेवर, अगर उनको क्रीमी कैरेमल पसंद आ गया तो उनको वो चाहिए. आई कांट लेट माई कंज्यूमर्स डाउन जस्ट बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग. राइट. आई हैव टू स्टे एट इट. सो जैसे अब पहले मार्केटिंग के लिए ऑब्वियसली हमें पता है ऑफलाइन मार्केटिंग वो समथिंग जो हर कोई कर रहा जी. था, एंड नाउ अब वो चेंज होके सोशल मीडिया में आ गए हैं. करेक्ट. यू ऑल्सो डू योर सोशल मीडिया मार्केटिंग. सम इनपुट और सम एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव रिगार्डिंग दैट. Advice on social media marketing. So
मुझे ऐसा लगता है कि being omnipresent is very important today. While a lot of our user base comes from Instagram, Right. so what we've recently seen that the customer initiation journey has moved from search to content. Right. Few years back, while we were in the digital sector then also, but the customer initiation journey started from a search. People used to search best beaten coffee brand in India, एंटर किया, जो पहला रिजल्ट आया उस वहां पे से चले खरीद गए, लिया, SEO बेस हो गया. SEO based हो गया. अब with ChatGPT coming in or other OpenAI tools coming in, the search has dropped because you get your answers right there, right then. Right. Right. Now, if you're putting it on ChatGPT, what is the most accepted flavor of beaten coffee by the coffee clique? You will get a very specific answer. Right. And now I can't manipulate that answer as a brand. Right. Search has gone. The only initiation which drives roughly 70-80% of organic traffic today is content. Right. Now that could be somebody is doing really good doing a meme content. Somebody is doing really good doing very informative podcasts. Somebody is doing really good by spreading facts and knowledge about a certain product. So, you have to grab on the trends. The trend today is content. It is not search. So if you are not doing what is happening today, then you are losing. So people had invested roughly 10 years building their e-commerce brands. Right. People had built their Amazon brand stores. There were lakhs of reviews. It was a universe in itself. Right. One day, quick commerce comes, Blinkit, Zepto, Swiggy, Instamart comes with deep pockets, and specifically for FMCG brands and F&B brands, e-commerce is just 10%. Now 80% has become quick commerce in no time. Right. And if you still decide कि मैंने तो e-commerce build कर लिया, I will not shift from e-commerce, then you're losing the train. आज की डेट में nobody can say कि मैं तो सिर्फ घर के बाहर वाली दुकान पे अपनी कॉफी रखूंगा. Right. नहीं बिकेगी ना. एक दुकान पे रख के आज से 25 साल पहले बिकती थी, 50 साल पहले बिकती थी. But now this has happened in offline also. Earlier it was general trade. घर के पास वाली किराने की दुकान पे रख दो, अच्छा रिस्पॉन्स आता था. Then it shifted to modern trade. Stores like Modern Bazaar, Krishna Store, these have taken up. Now similar has happened with the digital space. Customer doesn't initiate on search. Customer is not restricted to e-commerce. They are also not restricted to one platform on quick commerce. अगर कहीं पे ऑफर चल रहा है तो I am not loyal to Blinkit. I am loyal to the least price possible. मेरे को सेम कॉफी अगर जेप्टो 2 मिनट जल्दी डिलीवर कर रहा है या 5 रुपए कम में डिलीवर कर रहा है, मैं जेप्टो पे ऑर्डर कर इवन फॉर दैट मैटर आई सी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्विक कॉमर्स, आई सी कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का कंपटीशन एज सच है नहीं मेरी नजर में. क्विक कॉमर्स पे शायद मेरे को कॉफी के 10 ब्रांड मिल जाएंगे, राइट, 15 ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन ई कॉमर्स पे हो सकता है मुझे वो चीजें मिले जो क्विक कॉमर्स के पास नहीं है. सेकेंड चीज, आई ऑल्सो सॉ क्विक कॉमर्स में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी ही आ पा रही है. ठीक है, अगर आज मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ, मैं 50 बॉटल नहीं ऑर्डर कर सकती. वो एक बारी में आपको 1 या 2 बॉटल ही दे रहा है. गिफ्टिंग के लिए भी आप नहीं वैसे जा सकते. बट वेर एज वेन यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, दिस चेंजेस. ई कॉमर्स में मैं बल्क में भी ऑर्डर ले सकती हूँ. ई कॉमर्स में एक चीज है कि मुझे वैरायटी ज्यादा मिल रही है. एंड आई समहाउ नो कि यार अगर मुझे ई कॉमर्स पे कोई अच्छी डील मिल रही है ना, मैं ये नहीं कहूंगी मैं तो क्विक कॉमर्स से लेती हूँ. मैं लॉयल प्लेटफॉर्म्स को नहीं हूँ, बट प्रोबेबली कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मुझे लगता है तो मैं उधर भी लॉयल हो जाऊं कि यार उस पे तो बहुत सही होता है और उनका सामान सही होता है, मैं उधर से ही लूंगी. दैट्स व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू कि अगर कोई कॉफी लेना चाहे तो कहाँ से ले. बट दैट्स अ फैक्ट जो मैंने देखा है कि अगर मैं ब्लिंकिट से या कुछ लेने जाती हूँ या कोई भी क्विक कॉमर्स से लेने जाती हूँ तो आई सी कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ नहीं करती. मे बी बिकॉज द स्टोरेज उसमें एक बैरियर बन जाता है. There is another nuance to it, which is, say for example, we as a consumer were nobody who wanted something in 10 minutes. It was a trend, it was a habit, it was a culture that has been put into us. और लेजीनेस अलग बढ़ा दी है, अलग बढ़ गई. एक कोक भी लेनी है तो पहले कहते थे बेटा तो 4 स्टेप चल के चलेगा, कोक चाहिए अभी मंगवा देते हैं. Now we are ready to pay a 10 rupee platform fee or a 30 rupee delivery charge, but we don't want to get up. Right. And this is not something which was demanded by the customers. It is something which has been imposed by the brands, by marketplaces.
हमें हमारे को किसी को जरूरत ही नहीं थी 10 मिनट में समा मैं कॉफी अगर मैं आज ऑनलाइन ऑर्डर करता amazon हम्म फ्लिपकार्ट एनीवेयर, वो कल भी आ जाती तो कुछ वुड हो हैव नहीं मेड जाता. एनी डिफरेंस इन माय दिस इज लाइफ। समथिंग आई ऑल्सो फील कि नॉट सेइंग कि उनकी गलती नहीं है, नहीं, ऑफ बट कोर्स एट द सेम टाइम एज अ कंज्यूमर या इफ आई सी टुमारो माई किड्स, तो मुझे लगता है वो एक लेजीनेस का बहुत बड़ा सोर्स बन गया है. हमें भी मैं देखती हूँ जैसे हमारे पेरेंट्स पहले हमें कह देते थे उस बहाने और कुछ नहीं बंदा 10 स्टेप चल के चले चल के जाता था, चले, ले आता था. बिल्कुल। अब मम्मी भी बोलेगी ना, अरे बटर खत्म हो गया, अच्छा रुको ब्लिंकिट, अच्छा हम्म। रुको जेप्टो, क्या अब चाहिए, पेरेंट्स भी ये अच्छा बोलते हैं। 1 घंटे में 3 बार फीस देते हैं हमें. हम्म बिकॉज आई माई सेल्फ सी कि अभी मैंने कल आधा घंटा पहले कुछ मंगाया, फिर 15 मिनट में कुछ याद आया, फिर आ रहा है. मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, पर अगर मैं अपने अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के बैठूंगी ना, मैं हाँ, 2500 3000 फीस एक महीने में सिर्फ ये इसकी भर चुकी भर होंगी. चुके हैं। जो 3000 मुझे ऐसे खर्चना बहुत दुख देगा यार, 3000 रुपए ऐसे वेले पैसे ट्रू खर्चती है. ट्रू ट्रू। लेकिन क्योंकि वो 10 रुपए 15 रुपए करके जा रहा है, तो वो मुझे करेक्ट। पता नहीं चल रहा. And the worst part is for these marketplaces is that these marketplaces are typically not profitable on their operational level. Now, to get that money to be profitable, they are charging brands obnoxious amounts of money in their marketing or in their listing fee or whatever kind of charges that, and that charges eventually flow down to the customer. Now you don't get a 10 rupee Maggie in 10 rupees. You get it in 14 rupees. राइट. मैगी की कॉस्ट 10 रुपए ही है. It is the 4 rupee convenience fee that you pay. And that convenience fee is okay, fair. If you don't want to go out, you're getting something in 10 minutes. I appreciate that. And myself as an Indian, I'm very proud of what India is doing. राइट. So I've been to sizable amount of countries, but the kind of payment structures that we have in India, UPI is nowhere else in the world. राइट. राइट. The kind of ease, you just open your phone, you scan and you pay. That's something India has built over years, Agreed. and the kind of acceptance that UPI has got, बिकॉज similar is the इवन द case. फीस, मेरे जैसे फ्रेंड्स कोई कनाडा में मेरे पेरेंट्स रहते हैं या हांगकांग में मेरा कोई फ्रेंड रहता है, दिस आई आस्क देम तुम ऑर्डर नहीं करते तो कहते लाइक पागल है तू उतनी देर में हम खुद जाके ले आएंगे, Yeah, जितनी जितनी फीस हम देते हैं. correct. और उनकी सिर्फ डिलीवरी फीस खाने से ज्यादा है. People go to buy groceries, they come full of hands picking up their own rations. If you see राइट. in राइट. US, Indians or in Canada or in Australia, they would fix a day. Sunday को जाएंगे, 4 लोग घर राइट. से जाएंगे, they'll pick up their and they were there for a better lifestyle. But India में today it serves you as a सर्व्स. basic convenience. वन ऑफ माई फ्रेंड वाज सेइंग कि यार इंडिया क्या है, आज दोज हु लिव आउटसाइड इंडिया, Yeah. जो इंडिया रह रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा इंडिया बिल्कुल कहाँ पहुंच बिल्कुल. गया है. जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको पता है कि इंडिया, हाँ ये सी ये मार कुटाई जो गलत चीजें हैं, वो भी है. आई डू नॉट डिनाई दैट, वो है. कुछ चीजें ओवर द टॉप है इंडिया में, वो भी आई एक्सेप्ट. कि अभी ही जैसे कंट्रोवर्सी का भी यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, कोई Yep. बोला गलत बोला, ओके क्लोज स्कोल्ड पेनल्टी एंड शट देयर चैनल, एक्सेप्टेड. पर क्या जितने पागल आप एक स्टेटमेंट्स पे हो जाते हो, डू यू गो दैट नट्स व्हेन यू हियर अबाउट रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग Yeah. इन इंडिया? नो, So इट्स this नॉट is a दैट. वो very 2 दिन का शो रहता है, तीसरे दिन बंदा खत्म. This is a very classic example of the India's Got Latent या event that या happened recently. So 2 दिन में उनका गुजरात का शो भी कैंसिल हो गया. The brand deals got cancelled. All the videos got और मुझे deleted. लगता है आप इतना प्रेशराइज कर चुके हो, बिकॉज इन द मॉर्निंग लाइक कि कोई अगर अपने आप को कुछ कर ले इस प्रेशर में, हु इज रिस्पॉन्सिबल? गलत बोला, एक्सेप्टेड. क्या वो बोलना चाहिए था? नहीं. क्या वो उसके बाद क्या होना चाहिए था? क्या इतना किसी को प्रेशराइज करके डिमीन करना चाहिए? दैट इज ऑल्सो अच्छा, रॉन्ग. अगर if this was not acceptable, uh, from where were those 26 million views coming? That's what I was having my It was people conversation. like us I only was that. having this conversation with my parents yesterday, and they were telling ये culture. I said तो वही दे रहे हैं जो आपकी ऑडियंस देख रही है. अच्छा, I'll tell you a very interesting fact. So, for example, YouTube पे कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, and 4 of us sitting in this room are watching it on the TV. It is one view. But India's Got Latent हम देख चारों रहे हैं, but चारों अपने अपने रूम्स में Rooms देख में रहे हैं, देख रहे because हैं. the kind of content can, you know, there is और some हो sense. सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा है या बहुत हाँ, खराब of है, नो course. वन टू जज. किसी को बाहर के जगह ये बहुत चल जाती है यहाँ, और मैं उस स्टेट मतलब आई एग्री दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आई विल नॉट इवन से दैट इज राइट. नो, सो व्हाट, आई से एवरीथिंग इज रॉन्ग. मेरे को सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम होती है, जितना आप हावी हो जाते हो स्टेटमेंट्स पे, उतना हावी रेप केसेस
या ऐसी Exactly. बड़ी चीजों पे कोई क्यों नहीं होता है? That is my problem. This is specifically my concern also. Why does it take years, not Right. even months, to punish a rapist or somebody who's done a hit and run and the entire incident is captured on a CCTV Right, camera? right. वो Why? हमारे से घूम भी रहे हैं, Correct. कोई केस चल रहा है, हाँ. लगाए हैं अपना केस. And regular defaulters are proud of it. Why does it take years to solve those, Right. but it doesn't take even 2 hours to boycott somebody from a sir? So, for example, the same thing that has happened now. Panelists who've been there on 8 episodes of India's Got Latent, 30 लोगों पे FIR हुई, but वो आपने सारे एपिसोड्स देखे भी हैं तब तो नहीं हुआ ना. That is my point also. If we are so capable of taking a action in 2 hours, why don't we do it for rapists? Why don't we यही do मेरे it को for? भी, this is the only problem I have कि being a girl also I have कि today if I have to go out even for a cup of coffee I would need someone because I'll feel scared. Yes. ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम ही है कि why do you go mad over things which may be wrong but you don't go mad over things which are worst. Yeah. कि गलत है तो ठीक है, बॉयकॉट कर दिया आपने, लीश आउट कर दिया, पर किसी को इतना प्रेशराइज भी मत करो. फिर जब वो बंदा कुछ हो जाएगा, वो खुद को कुछ कर लेगा, तो सडनली स्टोरी बदल जाएगी कि अरे यार ये तो And गलत this is हो a गया, trend of he the was a hurts. nice guy. Correct. When everybody was watching it, nobody was objectionating it. Right. एक ने objection raise किया. Now certainly those 26 million people who've given those views to them are also against him. And or मुझे the सिर्फ ये show. लगता है कि they are also young kids. They can make mistakes and they're wrong. Yeah. They have made a mistake. Okay, let them. We on the panel are हाँ, not saying that that was right. right, right. But consequence की journey अगर ये है accepted, आप करो. आप करो. But do it for rapists also. That's Do what it my for point. the people who do People- hit and run. And उधर नहीं है ना, हाँ, प्रॉब्लम क्यों नहीं यही है कर कि सकते? इधर इतना ज्यादा Correct. गुनाह हो गया, बंदे ने पागलपनी कर दी, और उधर तो बड़े आराम से सब हो रहा है कि अभी केस चलेगा, Yes. अभी 2 दिन लोग रोड पे आएंगे, फिर 4 दिन जाएंगे, विच आई थिंक इज रॉन्ग. बट अदर देन दैट, अगर आप मेरे से पूछोगे इंडिया, आई सी इंडिया हैज ग्रोन इमेंसली Yeah. and I feel very proud of it. बाहर जी के भी, the only thing is there have been incidents where I have had a talk with people or clients from outside India, and when they know, okay, you're from India, the first thing they ask about is rapes. They do not ask about, or the other thing they ask about is Mr. Modi. Yeah. Oh, Yeah. he's doing great, that thing. Also, But- there are certain friends and family who are now settled abroad, but when they visit India once a year, apart from traffic, everybody is honking for no reason, people are not following the traffic lights, but they still say कि मैं 1 साल बाद आया हूँ और मेरे को इतना change दिखता है. There are Right, new flyovers, right. there are new metro lines that are being built. The kind of infrastructure that is being built, the highways that are being built is immense. इंडिया ग्रो कर रहा है, वी डू नॉट सेकंड दैट. बट जैसे अब क्विक कॉमर्स की बात हो रही, तो आई डू नॉट डिनाई कि मैं भी क्विक कॉमर्स पे ही जा रही हूँ, लेकिन एट की सब ऑर्डर कर रही हूँ घर बैठे बैठे, पर मुझे बैक ऑफ द माइंड में ये पता है दिस इज मेकिंग अस टू लेजी, Yeah. दिस इज नॉट द राइट ट्रैक. हम सिर्फ जल्दी जल्दी के लिए, हाँ वो क्विक कॉमर्स तब सही जब गेस्ट आ गया और कुछ चाहिए, पर अब हम वो इतने आदत हो चुकी है कि अगर मुझे एक चीज भी चाहिए, अच्छा अभी 5 मिनट पहले एक ऑर्डर, फिर 5 मिनट बाद एक ऑर्डर, So फिर 5 मिनट this बाद. journey had traveled so much so that 5 years maybe back, अगर जब ग्रोसरी शॉपिंग होती थी, so the entire family would used to have a list and one random We Sunday. still do that in Africa. Yeah. अभी भी like we stay in Kampala, तो हम ये अभी भी करते हैं. Correct. Every So the- लिस्ट बनती है, फिर Yes. हस्बैंड जाता है, Yes. सारे साथ जाते हैं. The We kids do- would have a different list. The Right. parents would have. Then and the- that was fun. And then on a Sunday, you fill up the car with the family. You go to a big bazaar and you come back with those heavy. But that was much way Yes. funnier. Then it moved to e-commerce की ठीक है 2 दिन में घर आ जाएगा. Then it moved to concepts like which were not quick commerce but nascent stages of quick commerce such as milk basket की रात को ऑर्डर करो, सुबह 7 बजे आ जाएगा. अब it is 10 minutes delivery. बट मुझे लगता है वो ना एक आपकी फैमिली को क्लोज Disconnect. नेटेड रखने का भी तरीका होता था जब हम बिग बाजार जाते थे, क्योंकि घर से मम्मी सिखा के लेके जाती, बेटा जो लिखा और कुछ नहीं लेना, और फिर हम जाके यहाँ से चिप्स उठा रहे हैं यहाँ से, वो एक फन होता था जो आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट Yeah. गेट टू सी. बट ऑब्वियसली उनके लिए होगा कि सब कुछ तो हो जाता है, आप लेके क्यों आ रहे हो हमें. बट हमारे को वो बहुत अच्छा टाइम लगता था. अच्छा आज राशन नहीं जाना, 3
चिप्स के पैकेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि हम साथ जाएंगे. सो वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्विक कॉमर्स वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज डिमांडेड बाय द कस्टमर्स. राइट. इट वाज इम्प्लांटेड कि आप कर सकते हो. और बैठे बैठे किसी को आराम मिलेगा, सब लेना हाँ चाहेंगे. हाँ कोई नहीं होगा जो बिल्कुल. कहेगा भैया मेरे को मत दो आराम. एवरीवन वुड बी हैप्पी यस अबाउट इट. यस. So coming to the end of the podcast, I would also like to know what are your views on the Brew Gang, the platform that we are bringing in. So I am really excited to see this coming up. We've had discussions on Yeah, this, yeah. and it really excites me. One, because not as a business that you're trying to build, but building a community out of coffee connoisseurs. We have a lot of online groups, but there is nothing where we can connect, buy, Right, sell, right. talk, podcast, share information, gather information. So I think I see that opportunity with Brew Gang, with the kind of depth that you go into of what you are doing currently, because I've spoken to you almost five Yeah, times now, and yeah. I know the kind of efforts that you put in building what you're trying to build. I'm really excited, and I'm hoping you launch this soon, and it'll be an opportunity for all coffee brands, for all coffee connoisseurs, and for people who enjoy coffee as a lifestyle also. Right, right. So That's really, that's really, what I have in I'm mind. really looking forward to it, and all the best for you for this. Thank you so much. So this brings us to the end of today's podcast. So if you want to know more about coffee, keep on following us. Keep an eye on what we bring up next for you. Thank you. Also follow us on Instagram. We go by Coffee the Click. name The Coffee Click. Yeah, do follow Coffee Click. Hi, all coffee connoisseurs. I'm Karthik Seth, founder and CEO of The Coffee Click. You can find our products on the Brew Gang. You'll find some really exciting offers there. Cheers.